I'm just making a diagram and you will explain the diagram to me. And I'm leaving some parts deliberately unlabeled. Okay, so you will then tell me what are those. ये क्या कर दिया मैंने? Just a minute. Okay, explain this process to me and also tell me the names of various parts. ठीक है? And to tell me the names of various parts, I'm just making label lines. And okay, now start this. What am I showing you on this diagram? So basically, you're showing me our DNA. DNA has a repressor. DNA is being converted to what? mRNA. So, what is the name of this process in which DNA is converted to mRNA? Translation. Yes, yes, Translation. No, transcription. Okay, yeah, transcription. Because you're making an mRNA transcript. Yeah. Okay, to convert DNA into mRNA, we need some things, okay? And those things have been labeled in blue and in red. What do you need to get? Miss, is one of them a repressor? No, it's not a repressor. Okay. अभी मैं बात ही नहीं कर रही ना, मैं बहुत बेसिक बात कर रही हूँ. I'm just telling you the basics of transcription in which we want to convert into mRNA, right? So in order to do that, we need two basic things. One has been shown in RNA polymerase, bilkul sahi. And what's the other one? And what else do you need? RNA polymerase. Red वाली चीज क्या है? Promoter. Very good, promoter. Okay. So, any idea what's the promoter? What is it? Promoter. Is it basically like Lakho में कि जो बाइंडिंग साइट है, like it makes कि दो जगह बाइंड हो सके, कि like एक साइड पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड. नहीं. Promoter is the place where the RNA polymerase grabs onto the DNA. Basically, the RNA polymerase is a blind enzyme. It's blind. It doesn't know where to start, right? In order to start transcribing, उसको start करना है transcription, ठीक है? तो उसको start करने के लिए एक starting point चाहिए, which we call as the initiation of transcription, ठीक है? Initiation or beginning of transcription. So the beginning of transcription is signaled by this promoter. अच्छा, क्योंकि मैंने ये promoter DNA के ऊपर बनाया है, so ये भी DNA ही है अगर देखा जाए तो, ठीक है? Is it DNA? DNA के ऊपर ही बना रही हूँ ना, क्योंकि ये सारा कुछ DNA है, ठीक है? So I would say, अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जा रही हूँ, because in A2 this detail is required. So if I want to go into the detail, I will say promoter is it's a DNA regulatory sequence, क्योंकि ये किसी चीज को रेगुलेट कर रहा है तो ये DNA. It's a DNA regulatory sequence which serves as a beginning of transcription, ठीक है? And we can also say that it's the place where the RNA polymerase binds to the DNA. It is the place where the RNA polymerase binds to the DNA. और ये definition बहुत important है, ये बहुत पूछते हैं paper 4 में. Binds to the DNA. ठीक है? अच्छा, ठीक है, समझ आए?
I had done a mistake actually. Just let me wait a minute. That for any gene or any protein to be synthesized, of course, we need DNA to be transcribed to mRNA, right? So वो जब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, जब तक ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है? Yeah. So why are we talking promoter is के promoter is that essential DNA regulatory sequence onto which RNA polymerase needs to attach to so as to begin transcription. So if there's no promoter, there is transcription and hence there is no protein synthesis. हम ये बात इंसुलिन पर्सपेक्टिव में क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इंसुलिन भी तो एक प्रोटीन ही थी ना, जो कि में बनानी थी, राइट? और हम ये कह रहे थे कि टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को जिंदगी भर के लिए प्रोटीन चाहिए, ये इंसुलिन, सो वी ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द जीन, इंसर्टेड इनटू अ प्लाज्मिड, और हमने समहाउ प्लाज्मिड को डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर। अब कौन उस प्लाज्मिड को इंस्ट्रक्शंस देगा, राइट? सो इट्स बेटर कि जो आपने इंसुलिन जीन डाली है ना प्लाज्मिड में, वो बिल्कुल नेक्स्ट टू द प्रोमोटर डाल दें, किसी भी चीज के लिए प्रोमोटर। फॉर एग्जांपल यहाँ जो एग्जांपल दी है, वो एग्जांपल दी है कि इकोलाई में देयर इज अ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, देयर इज अ बीटा गैलेक्टोसाइड, तो हमें पता है कि हाँ इकोलाई के अंदर ये वाली जीन है, और वो Yeah. बीटा गैलेक्टोसाइड जरूर ये जीन एक्टिवेट होगी। कब होगी? व्हेन द इकोला इज पुट इनटू अ मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज। इसका मतलब वो लैक्टोज, जब उसको लैक्टोज मिलेगा तो ये जीन एक्टिवेट होगी, क्योंकि इस जीन से लैक्टेज बनेगा ताकि हाइड्रोलिसिस हो। तो हम क्या करेंगे? वुडंट इट बी सेफ कि हम अपनी इंसुलिन वाली जीन जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट टू द बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन प्रोमोटर के बराबर में डाल दें? तो क्या होगा? व्हेन द बैक्टीरिया इज ग्रोन इन लैक्टोज, तो वो जब अपनी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन बनाएगा तो वो इंसुलिन जीन को भी ट्रांसक्राइब करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yeah. ठीक है, ये बहुत ही एक वो बात है जिसे इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट यू हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट द टेक्स्ट बुक इज सेइंग इन दिस, ठीक है? बिकॉज just by inserting a novel gene into a plasmid and just by putting that plasmid into a bacterium doesn't mean, or you're not 100% sure that that gene will be transcribed. To be 100% sure, you have to be 100% sure that that gene is being inserted next to a reliable promoter, ठीक है? प्रोमोटर होना चाहिए। प्रोमोटर उसको एक धक्का देगा, सॉर्ट ऑफ। प्रोमोटर उसको कहेगा ओके ना यू हैव टू ट्रांसक्राइब, यू हैव टू स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग, नंबर वन। प्रोमोटर उसको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि अच्छा आरएनए पॉलीमरेज को तुम्हें यहाँ आके बाइंड करना है, उसको ये बताएगा किस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होनी है, उसको ये तक बताएगा कि कौन सा। फॉर एग्जाम्पल यू सी व्हेन आई एम सेइंग ट्रांसक्रिप्शन ना, तो इसका मतलब पता है क्या है? कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कि आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब सबसे पहले तो आपको इस डीएनए को खोलना है, you have to open it up, right? open up के बाद भी आप ये नहीं आपको पता कि which DNA strand will be transcribed, this one or this one। तो प्रोमोटर ये भी बताता है, प्रोमोटर बहुत कुछ बताता है, राइट? प्रोमोटर allows the RNA polymerase to grab onto the DNA। promoter uh, uh, decides which strand of the DNA strand will become the template strand to make RNA। ज़ाहिर है हम इन दोनों strands में से किस एक, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं, देखो इसमें अगर फॉर एग्जांपल इफ आई अंडरलाइन द फंक्शन ना, तो मैं इस तरह कर सकती हूँ कि ओके लेट्स से इफ आई एम राइटिंग डाउन एन आंसर, ठीक है? मैं इसमें थोड़ी सी प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ, तो आई वुड से दिस इज वन पॉइंट, ठीक है? अच्छा सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दिस इज अनदर पॉइंट, ठीक? और थर्ड पॉइंट जो है वो ये है, ये थर्ड हो गया, एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट। अब पता है क्या है? Now, since I have outlined these 4 points in the number wise, अब आप इसको दोबारा से read करो। So yeah, I just read it. Okay, now Okay. this makes sense when you break it up. When you break it up, it makes sense. Acha, we are done with this, and let's now move on to a very interesting topic. I like it a lot, and that is PCR. Okay.
तो सब तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है व्हाट इज पीसीआर, राइट? कोविड का टेस्ट सबने कराया था। सो लेट्स ब्रेक द वर्ड एक्चुअली, एंड व्हेन यू ब्रेक द वर्ड तो बिल्कुल हमें समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेट्स ब्रेक इट। व्हाट इज पॉलीमरेज? हमने डीएनए पॉलीमरेज किया, आरएनए पॉलीमरेज किया, तो लिटरली व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पॉलीमरेज? With the word polymerase? हाँ, पॉलीमरेज का क्या मतलब है, बताओ? Anything Uh, which ends with the enzyme uh, is sorry, which yeah, ends with so the it's an enzyme, na? it's an enzyme. अच्छा, तो polymerase का क्या मतलब? That's many enzymes that'll substitute, that'll not substitute, that No, will. no, not many enzymes. देखो, अगर मैं कहती हूँ protease, तो it seems like it's an enzyme that's going to break down protein. ठीक है? फिर मैं कहती हूँ lipase Oh, so it's breaks an down enzyme that lipids. break down polymers. It will not break down polymer, it will make Okay. this polymer. Polymerase. DNA polymerase will make DNA. RNA polymerase will make RNA. यही हम पढ़ते आ रहे हैं ना अभी तक, right? Yeah. So So ये synthesize देखो them, crack na? synthesize. Now, so we are breaking this. So ये तो पता चल गया that there is an enzyme that's going to make DNA और RNA. ठीक है? चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन से मतलब जैसे वो आप लोग करते हो ना, उसमें फिजिक्स में करते हो शायद, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन करते हो ना, चेन रिएक्शन Yeah. होता है ना उसमें एटॉमिक, राइट? तो उसमें क्या होता है बताओ मुझे, एटॉमिक बॉम्ब में कैसे होता है चेन रिएक्शन? जस्ट टेल मी अबाउट इट। मिस अभी तक फिजिक्स में स्टार्ट नहीं किए, बट जनरल नॉलेज से भी नहीं पता, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो ये एटम बॉम्ब्स गिरे हैं, सो व्हाट तो इज सो वो डिजास्टर्स फिजन अबाउट में एटम? पहले वो फिजन में पहले वो रिलीज होते हैं, लाइक हाँ, मुझे याद है कि लाइक न्यूक्लियर फिजन पहले होती थी एंड देन चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, तब उसकी टेक्निकलिटीज याद नहीं, बट एटलीस्ट उसकी जिस्ट तो याद है कि समथिंग व्हिच व्हेन ट्रिगर्ड विल नाउ नॉट स्टॉप, है ना? यही उसका वो था ना बेसिक आइडिया। इट वोंट स्टॉप, सो इट्स अ चेन रिएक्शन, विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, सो द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर। इट्स अ रिएक्शन जिसमें किसी ना किसी तरह से पॉलीमरेज इन्वॉल्व है, ठीक है? और ये होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। एंड व्हाई डू वी एक्चुअली नीड दिस रिएक्शन टू हैपन? देयर आर टू रीजंस, फॉर सेपरेटिंग एंड फॉर एम्पलीफाइंग डीएनए। ठीक है? फॉर सेपरेटिंग एंड फॉर एम्पलीफाइंग डीएनए। फॉर एग्जांपल, आप जो है ये कोविड हो रहा है, ठीक है? तो डॉक्टर सस्पेक्टिंग कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन, so you are harboring the virus probably in your nose or in your respiratory system. So the nursing aide puts a swab into your nose and takes a sample of the virus. Now the chances are that that virus जो उसने लिया भी है ना सैंपल, वो बहुत थोड़ा होगा। सो यू वांट टू एक्चुअली जूम इनटू इट, ठीक है? यू जूम इनटू इट। अब वैसे तो जूम नहीं कर सकते, द ओनली थिंग यू कैन डू इट, यू कैन एम्पलीफाई इट। हाउ टू एम्पलीफाई? टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट, ठीक है? इफ यू वांट टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट, then how are you going to achieve that? Through polymerase chain reaction. You will be using DNA polymerase क्योंकि आपने viral DNA निकाला है। आप इस वायरल डीएनए को आपने स्वैब से निकाला, वो छोटा सा अमाउंट था। यू आर गोइंग टू अलाउ दिस टू बी प्रोसेस्ड इन एन इक्विपमेंट। लेबोरेटरी में ये है, खान हॉस्पिटल में है, अब तो हर जगह है, पूरी दुनिया में है, एंड दैट्स नोन एज अ पीसीआर मशीन। ठीक है? आप उसमें डालेंगे एंड दैट पीसीआर मशीन हैज गॉट ऑल द प्रोविजंस टू make billions, literally billions of copies of this viral DNA within hours, 2-3 घंटों में, and then you can easily study the virus. ठीक है? तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ये आप वायरल स्टडीज के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्राइम सीन है, राइट? बताओ क्राइम सीन में कैसे यूज हो सकता है, चलो खुद से सोचो। वेट, तो अगर फॉर पता एग्जांपल नहीं। इफ कोई मूवीज तो नहीं देखी है ऐसे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं देखी था लाइक इन अ क्राइम सीन वो फिंगरप्रिंट में यूज हो सकती है। फिंगरप्रिंट नहीं सोचो, ऐसे सोचो कि क्राइम सीन पे क्या क्या हो सकता है। अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। डीएनए लेफ्ट लाइक या हेयर स्ट्रैंड्स या ऐसे टाइप चीजें रह सकती। एग्जैक्टली,
सो वी कैन टेक दैट, ठीक and है। then you can और compare हम it. डीएनए तो कर सकते डीएनए हैं, की यस। टेस्टिंग कर सकते हैं ना? हाँ, वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो हम बिकॉज डीएनए को पीसीआर भी से आप कॉपी बना सकते हैं डीएनए की, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी का हेयर स्ट्रैंड मिला, मैं उसका वो कॉपी करूं, फिर मैं कंपेयर हाँ करूं किसी से आफ्टर मेकिंग लाइक हाँ, अ कंपेयर डीएनए? कर। जो कंपैरिजन वाली चीज है ना, वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो बाद में आए। इसमें सिर्फ हम पता है क्या करें, इसका जो पर्पस है ना, इट्स टू सेपरेट एंड टू एम्पलीफाई डीएनए, बस। सही है। एम्पलीफिकेशन चाहिए ना आपको, जूम इन करना है बहुत इजी वर्ड्स में, एक बड़े लेमैन वाले वर्ड में, यू वांट टू जूम इनटू द डीएनए, गेट अ पीसीआर, ठीक है। अच्छा, नाउ यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, और मैं ये टॉपिक टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाती हूँ। सो देयर वी हैव दिस डायग्राम। लेट्स, अच्छा पहले चलो डेफिनेशन को देख लेते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस, एज आई टोल्ड यू, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जो होता रहता है इन द मशीन, that amplifies selected regions of DNA using alternate stages of polynucleotide separation, denaturation of DNA, and DNA synthesis catalyzed by DNA polymerase. दिमाग को घुमा रही है ये डेफिनेशन, ज्यादा आसान हो कि if we see the procedure and then we can make the definition खुद से, ठीक है। Can you see my screen or should I hold my iPad the other way? नो नो, आई कैन सी प्रॉपर्ली। ठीक है, टॉप पे देखो, सबसे पहले वो आपके पास है सैंपल ऑफ डीएनए, जो बिल्कुल